हेलो ये बोल रहा है क्या कुछ? हाँ सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ भाई सुकून, तेरी आवाज। अच्छा ओके। गुड मॉर्निंग सर। चलो, तो हम लोग कहाँ थे? हम एवरेज एक्सेलरेशन कर रहे थे। नहीं, हम लोग ये क्वेश्चन दिया था सर, फिर लाइट सर आपने क्वेश्चन दिया था सर। हाँ लाइट एक्सेलरेशन चली के गई थी ऊपर। सर। हाँ सर। क्वेश्चन क्या था कुछ? हाँ A particle starts to move from हाँ point A towards point हाँ, पॉइंट ए बताओ क्या था? 3 minus 2 1. हाँ 2 point towards point B 1 minus 1 minus 1. फॉन्ट साइज बता दो भाई। 1 size minus सही है? 1 minus 1. फॉन्ट साइज सही है सर। Yes, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ यस सर। 1, Minus 1 minus 1. स्पीड 5 meters per second. 5 मीटर पर सेकंड। यस सर। Second part 3 meters per second. हमें क्या निकालना था? वेलोसिटी वेक्टर। Yes sir. Okay, so everybody please pay attention. This is where we left off in the last class. So we want to find the velocity vector of a particle which is moving from this point to this point having a speed of 5 meters. So I have told you, and I will keep on telling you, that the way to solve questions is to first write down what is given, okay, and then you write down the formula for whatever is asked. So they are asking us for the velocity vector. Then can you tell me what is the formula for velocity vector? Can anyone tell me what is the formula for Total velocity distance. vector? dx by dt. Displacement upon time is average velocity. ये सर dx by dt. हाँ, dr by dt. ये हमने डिस्कस sir. किया है ना? Yes This sir. is equal to dr upon dr by. सर आपको मेरे मैसेज आ रहे हैं क्या? हाँ, तो क्या? सर आपको मैंने आंसर भेजा था सर। अरे तो रुक ना, मेरे को समझाने तो फिर कंपेयर कर ले। ठीक है। एक तो जो मैं बोल रहा हूँ मुझे भी सुनाई दे रहा है, बहुत अजीब है। V is equal to dr by dt is the formula that we remember, right? Now, when I look at the data, there is no r as a function of time.
Okay. इसका मतलब ये काम नहीं करेगा. इसका मतलब कि कोई और फॉर्मूला होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा. नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज नहीं, वेलोसिटी. वो एवरेज के लिए होता है ना. इस केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम काम कर सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, इसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन है. तो इस केस में ऐसा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो सकता है, राइट. बट आई वांट यू टू फोकस ऑन another formula for the instantaneous velocity vector is defined as dr by dt. In this case, because the particle is moving in a straight line, you can consider it to be displacement upon time, right? Or what? एक और है. Sir, final pollution minus initial position upon time. हाँ, but that is the same as this, ना? भाई final position minus initial position ही तो displacement है. I'll put a star mark here. So this may be used here since motion is along a straight line. ये याद रखना. एक और फॉर्मूला चाहिए. One more. Speed is equal to distance upon time. हाँ, Upon time. नहीं, ये क्या बात हुई? Speed into direction is velocity. Speed into थोड़ा रिपीट कर सकते हैं. So it could be एक मिनट. हाँ, फिर से बोलो. क्या बोला? Speed into. so speed into unit vector. Very nice. हाँ sir. Okay. For those of you who are confused कि क्या बोला गया, you see, this is a vector quantity, right? और vector quantity के बारे में हमने क्या, जो भी हमने पढ़ा है था for vectors, it is applicable to V. And we had studied that any vector A can be written as magnitude multiplied by direction. Therefore, the velocity vector can be written as magnitude of velocity vector to direction of velocity. So these are the three things which you should have written down. I am sure that ये याद करना थोड़ा सा, you know, this is the leap that you have to take. Where am I getting this idea from? ये तो वेक्टर है. वेक्टर के लिए हमने जो भी वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है, that is applicable to this guy. Therefore, once you have done this work, then everything becomes easy. So this thing is already given to us. This thing we have to work out. कैसे वर्कआउट करेंगे? The particle moves from A to B. Therefore, the direction of the velocity vector will be the same as the vector B minus A. How did I get this?
So let's say that this is the XYZ coordinates. मैं Z coordinate नहीं बना रहा हूँ because थोड़ा difficult हो जाएगा. तो particle यहाँ था. A. Notice that I have written a vector. You remember a vector drawn from the origin to the points x, y, z is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. Therefore, this vector A will be equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap. And the particle moves towards the point B, for which the position vector is equal to I cap minus j cap minus k cap. Right? So the particle moves like this. Notice that I have not drawn the whole arrow. I don't need to. I only need to know, or I only need to understand that the particle is moving along this line. वो कहाँ तक move करेगा? It is not given. Particle starts from A, moves towards B. It stops at B. Is this given? No. Right? So won't vector A be pointing downwards as the y component is pointing? हाँ, so this is मैंने वो नहीं बनाया है because वो तो 3 dimension में है ना. I don't it's just generic vector A B. Okay. Okay. So now I understand that since particle moves from A to B, its direction of motion is same as direction of P minus, right? This vector, ये जो मैंने छोटा सा वेक्टर एरो बनाया, इसका डायरेक्शन वही है जो वेक्टर B माइनस A का. इसका डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन. So we know how to work out the direction of a vector. Why are we doing B minus A? Why not? भाई तेरे को नॉर्थ जाना है तो साउथ चला जाएगा वेदांत? नहीं सर. क्या? नहीं सर, नहीं जाऊंगा. अरे क्यों भाई, नॉर्थ बोला है, साउथ चले. अगर मैं ये डायरेक्शन पूछ रहा हूं तो इधर चलेंगे, ये बताएंगे कि ये बताएंगे? ये बताएंगे. So direction of motion is same as B minus A, not A minus B. A minus B would be going in this direction. B minus A is like this. Let's work out B minus A. This is vector B, this is A. So this will be equal to kitna? Anybody worked it out? Yes, I sir. cap Minus minus j cap minus k cap. 3i cap minus 2j cap plus k cap. Subtract them. So I cap minus 3i cap minus 2, sir, 1 and minus 2, sir. minus 2i cap Plus j. minus 1 minus minus 2. 3j cap. No, it is plus j cap, plus j cap. Minus 1 minus minus 2.
Sir, कितना one होता है? Plus 2 2 s j and Plus 1 j cap. one j cap. प्लस जे कैप Yes, sir. Minus 2 k cap. Minus 2k cap. माइनस के Minus 2 k Minus cap. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर, Minus. सब्ट्रैक्शन हो रहा है. Yes, sir. Minus 2 k cap. लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो वेक्टर बी माइनस ए है. हमें वेक्टर बी माइनस ए का डायरेक्शन चाहिए. क्या होगा वेक्टर बी माइनस ए का डायरेक्शन? कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन? ये रहा. So minus 2 I cap ए कैप निकालने के लिए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए. सो हेलो सर, हाँ सर आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, एक वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है? Sir, ये इसका this divided by root of 2 square plus 1 square plus 2 square, that is root 9 A maybe, by mod A. divided by 3. That would be mod of this vector. And times Mod 3 of we this get vector is 3. number. Yes, yes. Please remember the vector wala chapter, and that is the whole reason why I took so much time for vectors. धीरे धीरे पढ़ाया ताकि यहाँ पे problem. So we have found a vector and we need to find the direction of the vector. And to find the direction of the vector, all you have to do is divide by the magnitude of the vector. And the magnitude of the vector is given by Pythagoras theorem. Under root of this square plus this square. In case of three-dimensional vectors, it is under root of x square plus y square plus z square. जो भी coefficients हैं ij के, उनको स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लो. That's it. Found the magnitude. So the direction of this vector, direction of p minus a, will be minus 2i cap plus j cap minus 2k cap divided by 3. But this is also what? Incomplete. It's also the direction only. अच्छा, yes. सर नहीं समझा क्या? यहां से तेरा घर इधर है, इधर हाँ सर. i cap plus j cap. यस सर. ठीक है ना? अब अगर हाँ, मैं सर. इधर मूव करना शुरू करूं तो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी तो यही हुआ. आई एम गोइंग हाँ टू योर सर. हाउस, यस सर. राइट? तो ये b माइनस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही इस पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन, वही इस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन. ओके. और मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में क्या बताया था, याद है किसी को? व्हाट एल्स? उनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है. और they just give the direction of the vector. it gives the direction of the vector. और सर इसका कोई यूनिट नहीं होता सर, एज इन का कोई ये नहीं होता ना? very good, excellent. These are the little things that you need to remember. If these things are in your mind, then physics is a walkover. Unit vector does not have any units, ironically. So the direction of the vector b minus a
can also be the direction of a velocity vector. You can equate. So in normal physics, you cannot talk about equating displacement with velocity. You can't do that because the units of the left-hand side and the right-hand side of the equation would not be equal. It would be a nonsensical statement to say that the force on a particle is equal to the velocity, although the direction and the magnitude of the force vector and the velocity vector are the same. Yet you cannot say that these two vectors are same, because the force vector has a unit of newtons and the velocity vector has a unit of meters per second. However, if their directions are same, then you can write F divided by mod of F is equal to V divided by mod of V, right? So this is the uniqueness of the direction vector, of the unit vector. So the direction of B minus A is the same as the direction of V, no problems, no conflict of units. Okay. Now I can finally write the velocity vector is equal to the magnitude of the velocity, which is 5, multiplied by the direction of the velocity, which is minus 2i cap plus j cap minus 2k cap divided by 3. And in the second case, the velocity vector is equal to 3 सर multiplied डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? 3. ये यस सर. divided by magnitude, vector divided by magnitude अभी निकाला था ना अपन. हाँ जी सर. मैं केवल ये वाला वेक्टर यहां पे लिख दे रहा हूं. यही वेक्टर हमने Okay, फिगर sir. आउट किया ना. इट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी यस वेक्टर. सर. यस सर. minus 2 I cap plus j cap minus 2k cap divided by 3. 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे. मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर हम लोग टाइम हाँ निकाल ले भाई, तो. लिखा तो है यहाँ, मैंने लिखा है. आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं. ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं. जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज किया, आंसर यही आएगा. मैं केवल ये दिखाना चाह रहा था कि अगर मैंने वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला आपको बताया है dr by dt, या इस केस में, पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी वहां पे रुक गई. There is another layer, there is another thing that you can associate with the velocity vector, and that is the property of a vector. In this case, the property of a vector being that the velocity vector can be written as magnitude multiplied by direction. Is velocity vector in straight line b minus a? नहीं बेटा, it is in the same direction as b minus. So the vector b minus a has a direction. Okay. This is the vector b minus. It has a direction, it has a magnitude, it is its own vector. Now I start walking along this line. So my velocity has the same direction as the line segment b minus, the vector b minus. When will it not be along a straight line? What vectors would be like that? अभी आएंगे उसमें. सर अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो हम लोग बी माइनस से डायरेक्टली वी में पुट नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, आएंगे उस पे. वही तो मैंने बोला, आएंगे. खाली बस ये स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है. हाँ, वन डायमेंशनल. ये वन डायमेंशनल मोशन है. क्यों? This is one dimensional motion. Why? Because it is moving in a
straight line. ये आया सबको समझ में? Anybody not understanding? Anybody not understanding the perspective that I was trying to show? That you have a quantity, you have given formulas for that quantity, but you can also use the fact that this quantity is a vector quantity and therefore it will follow, it will have all the properties, qualities of a vector quantity. Only along the axis. Okay, chalo. Next question. It is the second part of this question. So I will write it and then I'll get the board right. Find the position vector of the particle after 10 seconds. Chalo, I'll pause. कर दे, pause कर दे. मेरे को हटने तो दे. नहीं तो देख नहीं पाएंगे. Sorry. स्पीड क्या ले सर? 3 वाली स्पीड से करें कि 5 वाली स्पीड से करें? Continuation of the previous question.
हाँ भाई, anybody is still having doubts on this? Let's hear this. So the direction of vector A is vector A divided by magnitude of. Okay. So the direction of B minus A will be B minus A upon magnitude of. आया समझ में? अनिश? हाँ सर। So what will be the position vector after 10 seconds? So we will just R multiply, right, the F. velocity vector by 10. हाँ? Can multiply the velocity vector by 10, right? से क्या मिलेगा? Displacement. dr मिल जाएगा ना सर? हाँ? dr मिल जाएगा ना उस समय, dr by dt है तो dt अगर 10 है तो 10 इंटू अगर वो कर दे तो उसे dr मिल जाएगा ना। मैं फिर तूने जो है रॉकेट की तरह बोलना शुरू किया, धीरे धीरे बोल। सर अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें dr मिल जाएगा ना सर? तो dr मिल गया तो वही तो r अबे हो क्या गया निकालना है ये बताना। पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता? एक ही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। एवरेज वेलोसिटी इनटू टी प्लस आर आई। हाँ, या तो ये कर सकते हैं। अच्छा, अब समझ में आया वेदांत क्या बोल रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ तो dr is equal to vdt. So dr is equal to v into 10. But dr क्या चीज है? rf minus ri is equal to 10v. Right? So this tells me that rf will be equal to ri plus 10v. ri क्या है? ए का कोऑर्डिनेट क्या था? 3 minus 2 1. Ten into the velocity vector. I will find for 3 meters per second जो speed. क्या आया था velocity vector? 3 और 3 cancel हो गया. Yes sir, minus 2 minus 1 2 y minus cap 2. plus j minus 2 3. Yes. Right. So RF is equal to 3 Minus 20. minus 20 Minus 17 I क्या? minus 2 plus 10 Plus 8 k क्या? plus 8k cap plus क्या? 8k cap sorry plus 1 Minus 19 k Minus क्या? 19 minus cap. 19k cap सर dr तो मतलब स्मॉल चेंज इन r होता है ना सर? तो स्मॉल चेंज इन r माइनस r कैसे होगा? एक छोटा सा चेंज होगा ना dr मतलब तो सीधे लाइन में चल रहा है ना, कोई फर्क नहीं। rf माइनस r क्यों होगा? स्मॉल चेंज इन r स्ट्रेट लाइन में है, छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन मिलके क्या बनेगी? सर उसको डेल्टा r लिख सकते हैं ना सर?
डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, चूंकि स्ट्रेट लाइन में है, मोशन वन डायमेंशनल है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं हुआ। जो चीज एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखी थी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी वैलिड रहेगी। Okay, this will separate when we are dealing with motion along a curved path. और ये ऐसे गया पार्टिकल, फिर ऐसे वापस आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, लेकिन इसमें ये नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये क्या है? अबे सर अपने डीआर को एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस, डीआर को एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हाँ तो आरएफ माइनस आर कैसे मैं है? टीवी, यहाँ पे जो टीवी है उसको वेदांत से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो आरएफ माइनस आर कैसे है? अबे डीआर क्या हुआ? स्मॉल चेंज इन आर। चेंज इन आर। चेंज क्या हुआ? क्या होता है चेंज? आरएफ माइनस, अच्छा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो आर एफ माइनस आर आई होता क्या? नहीं नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो ये स्टेप इम्पॉसिबल। सर अगर आप जैसे करा रहे थे सर, वो बता सकते हैं क्या? क्या जैसे कर रहे थे सर, एक दूसरे तरीके से कर रहे थे ना? क्या कर रहे थे? आपने स्टार्ट दूसरे से किया, दूसरे मेथड से स्टार्ट किया था ना सर, वो बता सकते हैं? दूसरे मेथड से स्टार्ट किया? हाँ सर, यही क्वेश्चन के लिए सर आपने पहले कुछ और लिखा नहीं था। नहीं, मैंने आर एफ माइनस आर आई, आर एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस मैं लिखने जा रहा था। सर वही सेम ही करा रहे थे ना? हाँ okay, so what I wanted to convey with this question, two things. पहला तो मैंने बता दिया कि आपको जब कोई चीज निकालना है, आपने आइडेंटिफाई किया in the problem that this thing has to be worked out. After that you write the formula, and the formula may not be what is written in your copy. It may be the other characteristic of that particular quantity. The second thing that I wanted to convey is the fact that we are using the full power of vectors to analyze this motion. तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे नहीं वैसे, but I just wanted to show that using vectors we can analyze motion. We will not be going into I cap j cap again. अब हम नॉर्मल वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, एंड but you have to keep this in mind. Chalo, let's start. So one dimensional motion. Now I told you that there are three possibilities, right? One dimensional motion mein there are three possibilities. The first possibility is that acceleration is zero. The second possibility is that acceleration is constant. And third one would be variable. And the third is that acceleration is variable. Okay, so one by one we'll deal with this. So case one, acceleration vector is equal to 0. And all I'm going to do is that I am going to assume that our definitions are valid. Nothing else I know.
मेरे को केवल जो वो 10 डेफिनेशन हमने लिखी थी बस वही मेरे को मालूम है और उसी पे हम वर्क करें. So if acceleration is equal to 0, I know that acceleration is defined as dv by dt. So since acceleration is equal to dv by dt is equal to 0, Velocity is called always will V be is constant. therefore v is equal to a constant. V naught. Okay, so I'm assuming that the constant velocity is V naught. What do we know about V? So, लिख दिया मैंने गलती से. V के बारे में हमें क्या मालूम? V is equal to dr by dt. But since we are only in one dimension, therefore I don't need this R vector Vector. because R vector is the position vector. The position vector is xi cap plus yj cap plus zk cap. I don't need that anymore. We are working only in one dimension, but we don't know which dimension. It may be, the motion may be happening along the x-axis, motion may be happening along the y-axis, motion may be happening along the z-axis, and motion may be happening along any line. For example, here, the motion was happening along b minus a. It's the space में ऐसी line थी. So I don't know what the axis is. So I will assume that the axis is x-axis. But whatever I will write will be valid for any axis. Right? जहाँ पे भी motion हो रहा है, you just have to replace that x by that particular axis. I will write this as dx by dt. Okay. So assuming that motion is along x-axis, maybe along any other axis. For physics only, right? In maths, that would be there. क्या लिखा है? नहीं समझ में आ सकता. सर वो पहले लिखा था सर, वो आपने बोला था ना सर कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. मैं पूछा था मैथ्स में आ सकते हैं क्या? नहीं मैथ्स में नहीं है. ओके. मैं केवल वेक्टर का एप्लीकेशन लिखा हूं. बिकॉज मैं जब 2 डायमेंशनल मोशन में आएंगे तो एक ऑल्टरनेट मेथड में ऐसे बताऊं. Okay, so v is equal to dx by dt. So dx by dt is equal to v naught because v is equal to a constant. So dx is equal to v naught dt. और जो काम मैं यहाँ नहीं कर पाया था वो यहाँ पे कर रहा हूँ. Whenever you have a d term on the left and d term on the right, then you have to integrate. In physics, of course, you cannot integrate without limits. You have to have limits. So on the right hand side of the equation, we are dealing with a variable time. So the limits must be of time. 0 to t. 0 to t. 0 represents when I started the stopwatch, and t represents an arbitrary time on the stopwatch. X naught On the to left hand side, we are dealing with the x coordinate. So the limits here will be xi, which is the initial x coordinate, and xf, which is the final y coordinate, final x coordinate. यहाँ पर जब इसको के बीच इंटीग्रेट, में क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर हाँ? यहाँ पर अपने एक्सएफ क्यों लिया?
अरे वो Final फाइनल point एक्स है वो। वैल्यू है ना, ठीक है ना, हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं ना। वेदांत सर वो नहीं सही पूछा, है। लाइक 0 से t अभी होता है ना, टाइम क्या है, लाइक आपने डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया? क्या? आपने डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया? डिस्प्लेसमेंट एक्स और एक्स एफ, लाइक डिस्प्लेसमेंट आपने क्यों लिया, लाइक पोजीशन एक्स और एक्स, वो क्यों लिया आपने एक्स और एक्स एफ? फिर तू रेस कार चला रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है, क्या इंटीग्रेट हो रहा है? वी डी टी अबे लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ, डी एक्स। तो लिमिट किसकी लेंगे? अच्छा एक्स। तो मैं कोई यहाँ वेदांत सीखने की जरूरत नहीं। एक्स एफ, आई होप इट इज रीडेबल। ये देखो चलेगा यहाँ सर, हमें क्या याद है सर। So xf minus xi is equal to v naught t. So xf is equal to xi plus v naught t. Right. So if we are dealing with zero acceleration, then this is the formula, right? Which is nothing but displacement is equal to velocity into time. So you see, in one-dimensional motion, for zero acceleration, average velocity and instantaneous velocity become the same. And that is why we had here RF minus RI is equal to 10. It was nothing but RF minus RI is equal to V naught T. ठीक है ना? Sir, if the v was a variable, we will have different अरे answers, अभी right? वेरिएबल नहीं है, A 0 है, अच्छा हाँ dV सर, by वो dt सेकेंड है, 0 है। थर्ड It is केस में आएगा ना। हाँ Sir, can you explain this again? हाँ, कौन सा part? So after you integrated displacement and v naught dt. हाँ, लिमिट्स डाला मैंने। Yes. Integration of dx would be simply x. Yes. Then you put in the limits xf and Yes, sir. I xi. got it. You get xf minus xi. And what is xf minus x? Supposing the particle is moving along the x-axis. so it is kind of like displacement, It is displacement, kind of नहीं है। ये x but equal to distance and 0 displacement would be the same, right? हाँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो at time t is equal to 0, the particle was here. Okay, so this becomes xi. And at t is equal to t, the particle is here. This becomes xf. So xf minus xi क्या होएगा? कितना आएगा? Okay, sir. Two. V naught. 2. 2. Oh, 2. 2. So 2 is the displacement. Now, here is the, क्या बोलेंगे, इस चैप्टर का सबसे बड़ा पॉइंट। अगर ये है xf, Can question can be negative as well. You told me that displacement will be equal to 2. But in this case, displacement will be what? 1. -1. -1. xf minus 1. xf minus xi. All Oh yes sir, -1. Yes. 0 minus 1. Minus 1. Sir, I didn't get it. -1 indicates the direction of the नहीं displacement. नहीं 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 नहीं, अभी रुक जा। Let me explain क्या हो रहा है। अच्छा okay. तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही। Please listen to me carefully. गड़बड़ ये हो रही है that I have a number line in front. Literally, the x-axis is a number line.
So when I say xf minus xi, आप xf जो भी कोऑर्डिनेट और xi जो भी कोऑर्डिनेट, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको आप सब्ट्रैक्ट करो. Now it looks like that you are subtracting two numbers. So in this case, you subtract 3, 1, 3 minus 1, and you get 2. In this case, you are subtracting 0 minus 1, xf minus xi, and you get minus 1. Right? Now you may be thinking, well, this makes sense. Obviously, इसमें क्या issue है? The issue is that this is a vector. It is not a number. You should always remember this. So here you have not carried out 3 minus 1. You have actually done 3 I cap minus 1 I cap minus I cap. And you have got 2 I cap. Here what you have done is 0 minus I cap, and you have got minus I cap. Please follow me very, very carefully. यहां पे आप नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट इन रियलिटी आप वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. एंड बिकॉज we are going to work only along the x-axis, we know that the motion is happening along the x-axis exclusively. Therefore, writing I cap, I cap, I cap, I cap with every vector is redundant, is you know how lazy we are, right? तो हर वेक्टर के साथ अब I cap या j cap या k cap, depending on which axis the motion is not required, because there is no other axis. तो there will, अगर आप केवल I cap में काम कर रहे हो तो j cap कभी आएगा ही नहीं, k cap कभी आएगा ही. तो अगर आप y axis पे मोशन एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो केवल j cap आएगा, I cap और k cap कभी नहीं आएगा. Therefore, we decide to drop this I cap for one-dimensional motion. Now this has unfortunate consequences. And what are they? The unfortunate consequences are that you end up dealing with numbers and you end up thinking of these quantities as numbers. तो आप बोलोगे अच्छा डिस्प्लेसमेंट -1 हुआ और डिस्प्लेसमेंट यहाँ 2 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इससे कम है. लेकिन दो डिस्प्लेसमेंट को आप कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो दो वेक्टर क्वांटिटीज. Therefore, it is my sincere request, and I will keep on repeating this request. Always bear in mind that whenever I write a negative looking number for displacement, velocity, acceleration in one-dimensional motion, I am actually writing the direction and the magnitude, whether I write a positive number or negative number. So if I write displacement is 2 meters, or the velocity is 2 meters per second, or the acceleration is 2 meters per second square, or minus 3 meters per second square, the plus part and the minus part are telling me the direction, and the number
is telling me the magnitude of the vector quantity. Right, so this is a very slippery slope. इसमें क्या है कि अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो सब कैस्केड होके सब गिर जाएगा. You have to remember that this is not a number. This is a vector quantity. Okay? So I will write this here. So for one dimension motion, we drop the basis vector ijk. The sign is of course retained. सर हम लोग इनका मैग्नीट्यूड तो लेकिन कंपेयर कर सकते हैं ना, लाइक डिस्प्लेसमेंट अगर -1 इसका अगर मॉड ले ले और उसका डिस्प्ले उसका भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना, दोनों वेक्टर्स का मॉड लेके. उससे कुछ मिलेगा नहीं लेकिन कर सकते. We will only compare magnitude. We can also say this. Take root of x square, always be positive, whichever greater. हाँ मैग्नीट्यूड कंपेयर. वही मैं बोल रहा हूँ ना, उससे कुछ मीनिंगफुल मिलेगा नहीं मिलेगा बात अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. यस. Okay. Please write this down. Very important. And then we'll start with the constant acceleration. Okay. I will just go off the screen. कायदे से लिखना है, फ्राइडे को सबमिट होएगा. यस, -1 का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड इज 1 एंड द डायरेक्शन इज -i. वाइन समझ में आ रहा है? सर संडे जो एग्जाम होगा उसमें लामीज थ्योरम नहीं आ रहा है ना? मेरे को नहीं मालूम. हाँ सर, लामीज थ्योरम. अरे मुझे नहीं मालूम है. ये उनसे पूछना ना, अमन सर बता दो. वाहिन समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये लगता है कि वाहिन सो गया लग रहा है.
मृणाली समझ में आ रहा है? योर अंडरस्टैंडिंग? हेलो, सर आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज तो आ ही रही है। Yes, sir. मैं तो मृणाली समझ में आ रहा है? Yes, sir. श्योर यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। नींद तो नहीं आई? No, sir. सर इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है? एक्सएफ इज इक्वल टू एक्सएफ प्लस वी नॉट टी उसमें था, लेकिन अब इसमें क्या होगा एप्लीकेशन? वेदांत फाइनल पोजीशन मिल जाएगा ना अगर इनिशियल वेलोसिटी है। मिहिर समझ में आ रहा है? हेलो, सबका वीडियो मैं ऑन करा दूंगा। मैं सब सो रहे हैं। केनेथ, Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग, फॉलोइंग? Yes, sir. चलो भाई कंटिन्यू करो। नहीं ये क्या लगाया है? फोटो कार्टून कैरेक्टर लग रहा है। ये आंख उसकी लाल, सुपरमैन है। क्यों मृणाली, सदगुण तूने क्या लगाया है? सर एक बहुत छोटा सा ना सर, एक स्पेस में एक छोटा सा एस्ट्रोनॉट है, वो बुक पढ़ रहा है। केनेथ का सबसे बढ़िया है। अर्नव का भी कुछ कुछ तो है, ड्रैगन टाइप में। अर्नव Yes, sir. क्या है तेरा ये डीपी? डेथ नोट का है। हाँ हाँ सर, डेथ सर एक गाने में है उस पे। अच्छा, डेथ नोट। हाँ ये मैंने बहुत बढ़िया सुना है। Sir, anime. एनिमे है ना? हाँ हाँ सर। सर। Anime. मृणाली का भी एनिमे है, यज्ञेश का भी है। Yes, sir. गेम यज्ञेश का गेम है सर। अच्छा इसका गेम है यज्ञेश? No, Valorant. Valorant. वो वैलोरेंट का। ओके केनेथ, ये क्या है? SUKU? So that is the character Mrinani. I don't know how to say her name, so sorry, sir. अच्छा वो that's also your DP is also an anime character. No, my DP is actually my logo. Like नहीं तो it is that's a what I K said ना। and yeah. चलो स्टार्ट करते हैं।
So today I'm only going to derive the equations, then we'll stop. Next class we will see the application. So case 2, when acceleration is constant. Okay, so what we are saying is that A is equal to A naught. Acceleration is constant. Now remember, we don't know anything. We don't know anything except those 10 definitions. So let's write down. Since A is equal to dV by dt is equal to A naught. What can I do now? Sir, cross multiply and integrate. dV is equal to A naught dt. And now I can integrate. Remember that A naught is a constant, so it will come out of the integration. It will not take part in the integration process. V minus U equal to 80. We can take 0 to T. T. And U और and यहाँ V. पे U and V. Initial velocity I will call U. Final velocity I will call V. Right? This is by convention. मेरा मन तो VI और VF लिखने का होता है, but convention. So if I integrate this, I get V minus U. Here I get A naught तो बाहर ही चला जाएगा. Basically it is A naught integration T. of dt. T आ जाएगा फिर 80. V A equals naught U T. plus 80 आ गया सर. So V is equal to U plus A naught T. Right. What else do we know? V vector equal to ds by dt. या x या r जो भी है. dx यूज कर सकते हैं. dx by dt से अब v हमें वेरिएबल होगा ना यहाँ पर v, लेकिन हाँ, very good. Yes, yes. इसका मतलब ये यहाँ पे v u वेरिएबल स्क्वायर बनेगा क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बनेगा. करने देना, करने. कॉपी में कर अपने. फिर देख वर्कआउट कर. प्रेडिक्ट मत कर. dx will be equal to v dt. Sir, v vector would be a linear expression of time and the ये रहा ना. displacement vector would v be. तो हम वर्कआउट कर चुके हैं. नहीं सर, वो मतलब v के साथ अगर करना है तो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा t के टर्म्स में. So this will go from 0 to t. Remember ये v से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. dt decides कि यहाँ पे लिमिट्स क्या हैं. और यहाँ पे as before, तो I will get xf minus xi on the LHS. But on the RHS, u plus 80 times t. I will have to integrate u naught plus a naught t. Yes. dt. Right? I have substituted the value of v, Yes, yes. which will be equal to integration of u naught dt. याद है ना पहला रूल. हाँ, yes sir. U naught dt plus a naught Plus dt. A naught t naught dt. t dt. u naught is a constant, बाहर आ जाएगा. a naught is a constant, बाहर आ जाएगा. क्या आएगा integration of dt? What is integration of dt? T. T, yes. Okay. Plus a naught बाहर आ गया. Integration T of t square dt. by 2. T square by 2. Half A t a square. naught t square.
Okay. Now what is xf minus xi? Displacement. Displacement. xf minus xi is equal to displacement, which is equal to, I don't want to keep on writing xf minus xi. So why is velocity the vector in this case and it wasn't in case one? नहीं, केस वन में भी था. अगर मैंने एरो नहीं बनाई. We can also write xf equal to xi plus ut plus half h. Yes, we can. Yes, we can. Yes, yes. In fact, I will. ठीक है? Now, what would happen if you were to substitute the value of a naught here? Please do that. We get the third equation. 2as equal to v square minus u square. सर अगर हम लोग लाइक v को डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करते हैं, v वेरिएबल है तो हमें उसका v वेरिएबल तो v एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? v स्क्वायर हाफ v स्क्वायर हम लोग नहीं लिख सकते थे, हाफ v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. अगर हम v को डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करते तो क्या होता? v डैश को अगर हम ये सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं. डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं. डायरेक्टली कैसे इंटीग्रेट करते हैं? ये वेरिएबल है, v तो वेरिएबल है ना सर. हाँ, तो इसका अगर वो होगा तो वो v एक्स स्क्वायर v स्क्वायर नहीं होगा क्या? v स्क्वायर बाय 2. ये बता ना मेरे को, इसकी वैल्यू क्या है? नहीं हो सकते ये तो इंटीग्रेट. नहीं हो सकता. तूने तो कर दिया ना अभी. v वेरिएबल है, dt है, वहां पे t दूसरा वेरिएबल है, तूने इंटीग्रेट कर दिया. हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. इसीलिए v को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सब्स्टिट्यूट. चलो, I will stop here and we will continue in the next class. Please again write this down, and your homework is, जो सदगुण ऑलरेडी कर चुका है, derive. Now there is no calculus involved. Derive the other. सर ये एनसीईआरटी क्लास में करवा दिया है, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ. two equations of motion. तो अच्छी बात है ना. सर दोनों मेथड से करा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. डबल रिवीजन हो गया. क्या करना है? हाँ, सबमिट क्या करना है? डिराइव द अदर टू इक्वेशन. नहीं नहीं, क्लास ये कॉपी में ही करना है. फ्राइडे को सबमिट होएगा ना क्लास वर्क वाली कॉपी. यस सर. उसमें आई विल चेक. ठीक है, अभी काइनेमैटिक्स का कोई होमवर्क और नहीं है. यू कैन जो अदर टू जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है सर, लाइक ये लाइक एक तो हमें ए नॉट की जो वैल्यू है वो सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर दूसरा के लिए क्या करेंगे? फिर दूसरा जो इक्वेशन होगा. यही सोचना है ना वेदांत. मैं पहले ही बता दूंगा तो कैसे होगा भाई. दो इक्वेशन है, आपने एक को एलिमिनेट किया, दूसरा भी एलिमिनेट कर. और एक ही इक्वेशन चाहिए ना हमें, और एक इक्वेशन निकालना ना जो थर्ड. दो और फाइंड द अदर टू इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है ना. कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है. ये देखो, इसमें s नहीं है, इसमें v नहीं है, तो मेरे को एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें u नॉट नहीं है. मेरे को एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें a नॉट नहीं है. ठीक है. t नहीं है, ऐसा भी इक्वेशन चाहिए. चलो, so we'll stop here and I will see you in the next class. Thank you, sir. Bye, sir.
you so bye. Thank you, Bye, sir. Bye, sir. sir. You so bye, sir. थैंक यू Thanks, सर, sir. बाय है ना सर। सबने? अभी ये लिख लिया है कि चाहिए ये? हाँ सर, लिख लिया लिख लिया। लिख लिया, sir. मतलब तब भी 5 मिनट आई विल लीव इट। ठीक है, You so bye, sir. इसको आकाश